Hello everyone, this is Advocate Radhika Sharma, associate with the Lexis and Company. So, in the series of important section regarding police investigation, or which deals with police investigation, we will gonna discuss the section 162, which states statements to police not to be signed, use of statement in evidence. The description of this section states that no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such a statement was made. एज इन कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि बनी है बाय अ पर्सन पुलिस ऑफिसर के सामने किसी इन्वेस्टिगेशन के इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन रिड्यूस होगी टू राइटिंग में भी साइन बाय द पर्सन में जो पर्सन बना रहा है वो दे रहा है स्टेटमेंट उनसे उनके द्वारा साइन की जाएगी एंड nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for like किसी भी पर्पस के लिए वो यूज़ नहीं हो सकते और ना ही स्टेटमेंट का या फिर कोई रिकॉर्ड एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन द टाइम एंड सच was made, provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court. अगर यदि सपोज कि कोई भी विटनेस जो है कॉल हुआ है प्रोसिक्यूशन के लिए उस इंक्वायरी में जिसका ट्रायल होता है यानी ट्रायल के लिए जिसकी स्टेटमेंट बनी है और रिड्यूस हुई है इनटू द राइटिंग, तो कोई भी जो पार्ट है स्टेटमेंट का अगर वो प्रूव हुआ है मे बी यूज बाय अक्यूज एंड विद द परमिशन, यानी वो यूज़ हो सकता है बाय द अक्यूज एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय प्रोसिक्यूशन to contradict such witness to in the manner provided 145 of the Indian Evidence Act, and when any part of such may so use, any part may also be used in the re-examination of the such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred by his cross-examination. Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provision of clause 1 of section 32 of Indian Evidence Act or to affect the provision of section 27 of this act. So that's all about the section 162 of CRPC. Thank you guys, thank you for watching us.